हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आज से हम अब एक नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो आज हमारा लेक्चर होगा इट विल बी अबाउट टोपोलॉजिकल स्पेसेस। यहाँ सबसे पहले मैं आपको इसकी जो डेफिनेशन है टोपोलॉजिकल स्पेस की उसकी थोड़ी सी मोटिवेशन दूंगा। उसके बाद हम डेफिनेशन देखेंगे और फिर हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखिए, इफ एक्स डी बी अ मेट्रिक स्पेस। मैं बेसिकली जो ये मोटिवेशन होने जा रही है ना फॉर द डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेसेस, उसके लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए उन्हीं को पहले अब यहाँ पर कलेक्ट करेंगे। ठीक है, सो इसके लिए मैं पहले क्या कर रहा हूँ, आई टेक अ मेट्रिक स्पेस। इफ दिस बी अ मेट्रिक स्पेस एंड सपोज टा sub d, this be the collection of all possible this is the collection of all possible open sets in XD। तो मैं एक मैट्रिक्स स्पेस ले रहा हूँ और उस मैट्रिक्स स्पेस में जो जितने भी ओपन सेट्स हैं उनकी कलेक्शन हम ले रहे हैं और उस कलेक्शन को हम एस से डिनोट कर रहे हैं, टा सब डी फुल स्टॉप या कॉमा करिए यहाँ, कॉमा देन वी नो दैट दिस टा सब डी has certain properties as the following rather possesses the following properties। इससे पहले भी आपने अपनी नोटबुक में ये चीज लिखी होगी, आपको आप वहां से भी ये देख सकते हैं। इट हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी, जो एम्प्टी सेट है एंड द होल सेट x, मतलब द स्मॉलेस्ट सबसेट द लार्जेस्ट सबसेट ऑफ x, दे आर बोथ एलिमेंट्स ऑफ, दैट मींस दे आर बोथ ओपन इन द मैट्रिक्स स्पेस XT, है ना। और क्या हमें पता है इसके बारे में, दिस टा सब D is closed under arbitrary unions। और भी हमें ना पता है इसके बारे में कुछ, this is closed under arbitrary unions, and the third thing is this, टा sub D is closed under finite intersections, है ना। ये चीजें हमें देखी, तो सब एक तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। सो दैट मीन्स जो ये कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स होती है ये कोई आर्बिट्ररी कलेक्शन नहीं होती है। इट हैज सम ना, इट हैज इन अ वे इट हैज सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर। इट हैज दीज थ्री प्रॉपर्टीज। मतलब कोई एरी गैरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स नहीं हो सकती। इट हैज टू हैव सर्टेन प्रॉपर्टीज। क्योंकि आप यहाँ ये देख रहे हैं, टा सब डी it possesses phi and x as elements, right? It's closed under arbitrary unions because arbitrary union of metric open sets is metric open, right? इसी तरह से finite intersection of metric open sets is metric open, ठीक है ना। तो it possesses these properties। एक और चीज आप याद करिए, the definition of convergence of a sequence in a metric space।
convergence in a metric space. इसे भी आप याद करिए. Recall if XD is a metric space and Xn and running from 1 to infinity be a sequence in XD, then we say this sequence Xn and running from 1 to infinity, it converges in XD if and only if we can find an X in capital X, and later on this X turns out to be unique also, such that for every epsilon, या such that आप ये भी लिख सकते हैं directly, such that epsilon epsilon lambda फॉर्म में लिख सकते हैं, या आप ऐसे लिमिटिंग फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, such that limit n goes to infinity, the distance between the nth term of the sequence xn and this point x, it is 0 in the limit. ठीक है ना. अब अगर आपको याद होगा, हमने ये जो कन्वर्जेंस क्राइटेरिया है ना, इसको हमने एक और इक्विवेलेंट फॉर्म में भी लिखा था. मतलब we have also an equivalent criteria for convergence in terms of open sets. आप वो देखिए और मुझे बताइए क्या लिखा है आपने वहां पर. इसका ना, इसकी एक इक्विवेलेंट फॉर्मुलेशन है, बिल्कुल जो आप ये देख रहे हैं ना यहाँ, इक्विवेलेंटली इट मींस दिस आल्सो. Equivalently, if xd be a metric space comma x be a point in capital X and xn and running from 1 to infinity be a sequence in X, then we say the sequence xn converges to X as n goes to infinity if and only if for each open set containing this little x as a member, we can find if and only if for each open set, let's denote the open set by O, if and only if for each open set O containing x as a member, we can find a positive integer lambda such that xn's belong to O for all n's greater or equal to lambda. That means एक स्टेज के बाद ये सारे xn's कहाँ रहते हैं? O में. This also means convergence. अगर आप ऐसा कर सकते हैं. If for each open set O, if we can find a positive integer lambda, this lambda depends upon O, by the way. If you change O, lambda will change. And by the way, the open set containing x is also called as the neighborhood of x. ये याद रखिएगा, जब अगर मैं neighborhood कहूँगा, it means open set neighborhood of some point means actually an open set containing that point, right? So O here
since it's open and it contains X as a member, so therefore O becomes a neighborhood of X. So basically the requirement is for each neighborhood of X, there must be a positive integer such that X belongs to the neighborhood for all n's greater or equal to that positive integer. This also means convergence, it's equivalent to this. So कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये दूसरी वाली जो इक्विवेलेंट क्राइटेरिया है, इसमें आप मेट्रिक का किसी भी जगह इस्तेमाल नहीं कर रहे, हो रहा है किसी जगह क्राइटेरिया, एज फार एज क्राइटेरिया इज कंसर्न, कन्वर्जेंस क्राइटेरिया इज कंसर्न, एज सच मेट्रिक का इस्तेमाल नहीं. तो यहाँ से एक इंप्रेशन हमें मिलता है कि इफ वी नो विच सेट्स आर ओपन वी कैन डिस्कस कन्वर्जेंस. ठीक, तो यहाँ से ये साफ साफ हमें समझ आता है कि इफ वी नो which sets are open, then we can discuss convergence of sequences. ठीक है ना. एक और important concept जो हमने metric spaces में सीखा था, that was continuity of functions, right? Basically these are the two most important things which we study in metric spaces: convergence of sequences and continuity of functions. जो कन्वर्जेंस है सीक्वेंसेस की, इसको आप कैप्चर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ओपन सेट्स, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर. व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी? ठीक, इसके लिए आप ये देखिए, सपोज इन अ वे दिस इज ऑब्जर्वेशन, ये दूसरी ऑब्जर्वेशन होगी एसेंशियली, इनफैक्ट तीसरी. अगर वो आप मेट्रिक ओपन सबसेट्स की कलेक्शन, अगर आप उसको पहली ऑब्जर्वेशन मानेंगे, सेकंड ऑब्जर्वेशन इज रिगार्डिंग द कन्वर्जेंस, थर्ड विल बी दिस. अब यहाँ क्या करें आप, सपोज f from xd, metric space xd into y sigma into metric space y sigma is a function. Full stop. Now if a be a point in x, so a is a point in x, पिक्चर कुछ ऐसी आएगी, सपोज दिस इज x, सपोज दिस इज y, ये है हमारा x, और यहाँ डिस्टेंस मेजर करने का मैकेनिज्म है d, so this is xd. In the same way y distance measure करने का मैकेनिज्म है sigma. The mechanism to measure distances in y is sigma. Next we are taking a point little a and capital X. Suppose this is little a. Then since f is a mapping from x to y, so that means this a will have an image fa in where? In this space y sigma. The function f. अब आप ये if a be a point in x, और मान लीजिए ये जो पॉइंट आप यहाँ ले रहे हैं, मैं इसको ना सही तरह से लिख रहा हूँ. हमने कैसे लिखा है इसको, सपोज दिस f from this to this is a function. इसके बाद हमने एक लिटिल a लिया इन कैपिटल x, और हम इस पर ना कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स इम्पोज करेंगे इस लिटिल a पर, और मैं वही लिख रहा हूँ. if little a in capital X is such that, ठीक, is such that, ये कोई ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं होना चाहिए, it has to be like this, is such that each neighborhood, so each neighborhood means each open set, चलिए open ही लिखें, such that each open set V in y sigma containing, such that, ऐसे लिखिएगा, such that for each
if A in capital A is such that for each open set V in Y sigma containing f of A, तो ये जो V है it has to be open and it must contain f of A, this f of A as a member. If for each open set V in Y sigma containing f of A, we can find, मतलब ऐसा होना चाहिए, should be, if for each such V you should be able to find, क्योंकि हम start कर रहे हैं ना with if A in X is such that for each open set V in Y sigma containing f of A, we can find that there exists there exists an open set O in XD containing the point little a. So corresponding to this open set V which lives in Y sigma and contains f of A, there must be another open set. कहाँ पर? In the space XD containing A such that f of O, that means when you apply f to each point in O, you should get a subset of V. Full stop. हम ये मान रहे हैं इसी में, हम मान रहे हैं कि that for each open set V containing f of A, मतलब ऐसे, there is an open set which contains this f of A as a member, and corresponding to this open set V there exists another open set O. वो कहाँ होगा? In XD, यहाँ, which contains A as a member, and such that if you apply f to each point of this O, you must get a subset of V. वही लिखा है ना यहाँ f. This means ये जो है ना, this is actually f square bracket O is actually this, it's f of x as x varies over O. So essentially you have to apply f to each point of O, और ऐसा करने से आपको एक सेट मिलेगा, that set has to be a subset of V. इस तरह की हमारी assumption है, हमारा है कि for each V there is O. ठीक, let's see इसकी further ramifications या इसकी further consequences क्या होंगी फिर. अब आप क्या करिए, let epsilon greater than 0 be arbitrary. ठीक, then अगर ये आर्बिट्री है और पॉजिटिव है, देन अगर आप इसे देखेंगे s f of a epsilon, what is this? It is open sphere whose center is f of a and radius is epsilon. आप इसको रखिए v, क्योंकि यहाँ जो ओपन स्फीयर का सेंटर है it is f of a is a point of y, so that means it must be an open sphere in y sigma. This is open sphere in y sigma with center f of a, radius epsilon. Open sphere in y sigma, and open spheres are open, so it is open. So this is open, that means V is open, and since open spheres contain their center, ठीक, so that means f of a must be a member of V. Then V equal to this is an open set in y sigma because it's an open sphere in y sigma containing little f of a, f of little a as a member. और हमारी assumption क्या है? हमारी assumption यह है कि for each such set, for each such open set, there exists another open set O. तो अब इस V के corresponding भी होगा ना एक नया open set. मैं अब वही लिखने जा रहा हूँ, and
Therefore, we can find an open set capital O कहाँ in X D. इस कैपिटल O में क्या होता है? It contains containing A, so it contains A, and f of O is contained in V, such that पहली चीज A belongs to O, and दूसरी चीज f of O, if you apply f to each point of O, you'll get a subset of V. And what's V? V is actually S f of A epsilon, open sphere with center image of A under F and radius epsilon. आपको ये मिलेगा, ठीक है ना? Now what's O? O is open and A is a member of O. So that means A is an interior point. So that means there must be an open sphere centered at A and contained in O. Saying that there is an open sphere means there is a radius. Radius is delta. ठीक, मैं वही लिखने जा रहा हूँ. Since capital O is open and little a belongs to capital O, it follows we can find a delta positive such that what? Such that the open sphere S A delta with center A and radius delta, this will be contained in O. ठीक, तो ये होगा. Therefore, now if we apply F to each point of this open sphere, that means अगर आप ये करेंगे F S A delta, क्योंकि जो open sphere है it's contained in O, so it will be a subset of the set which you obtain by applying F to each point of O, right? And this f of O, we know that it's contained in V, which is S f of A epsilon. So therefore this is contained in S f of A epsilon, right? Full stop. ठीक. Hence अब देखिए यहाँ से मैं क्या obtain कर सकता हूँ. Hence suppose x belongs to, या ऐसे लिखिए, आप पहले देखिएगा फिर आप कॉपी करेंगे. Suppose x is such that d of x comma a is less than delta. अगर ऐसा है, if d of x comma a is less than delta, it means x belongs to s a delta. ठीक, x belongs to this. So that means f of x, it belongs to f of s a delta, because f of s a delta is the set which you obtain by applying f to each point of S A delta. X is a point of S A delta, so f of x will be a point of this, right? But this set is contained where? This set is contained in the open sphere S f of A epsilon, or ठीक है ना? This set is contained here, so that means f of x belongs to this open sphere. और अगर f of x इस open sphere में है तो फिर क्या होगा? क्योंकि ये जो है आपका, this is contained in S f of A epsilon. ठीक, तो आप कह रहे हैं कि f of x is a point of this open sphere, so that means the distance, और वहाँ ये किस स्पेस का ओपन स्फीयर है? ये y सिग्मा का ओपन स्फीयर है, और वहाँ डिस्टेंस मेजर करने का मैकेनिज्म है सिग्मा. So that means sigma of f of a and f of x, that means distance between the center and the point, it must be less than the radius, it must be less than epsilon. तो क्या देख रहे हैं आप देख रहे हैं कि this actually leads to this. Assuming this, we can prove this. So that means मैं ये लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ this is less than epsilon whenever this is less than delta. ये मैं लिखूंगा. Hence
sigma of f of a and f of x, this will be less than epsilon. लेकिन कब? Whenever this thing happens, d of x a is less than delta. That means whenever d of x a is less than delta. ये बाकी अब आप रब करिए तो देखिए, इसे आप समराइज करिए, आप देखिए हमने क्या प्रूव किया. Basically, by assuming this, हमने हमारी यहाँ assumption ये, for each open set V containing f of a, there exists this O containing a such that f o is contained in V. Using this, हमने essentially ये prove किया. मैंने आपको दिखाया for each epsilon, because epsilon is arbitrary, मैंने आपको दिखाया for each epsilon positive, there exists, we can find means there exists a delta positive such that whenever x is delta close to a, the image of x under f will be epsilon close to image of a under f. So point is close to a means image of that point is close to image of a. This means what? Thus f is continuous at a. So assuming what? Assuming this means f is continuous. इसको हम लिखेंगे नीचे. तो बेसिकली हमने ये ऑब्टेन किया. If xt, या ऐसे लिखे if f from, जैसे ऊपर हमने लिखा था f from xt into y sigma be a function a be a point in x, and if for each neighborhood means open set of fa, for each neighborhood v of for each neighborhood v of fa, we can find a neighborhood O of A such that f of O is contained in B. हमने देखा अगर ऐसा है, this means what? This actually means f is continuous at the point A. ठीक. What's remarkable, the converse is also true. मतलब if f is continuous at A, तो फिर ये होना ही होना चाहिए. ये मैंने खुद आपको दिखाया. ये वाली जो implication है, ये आपके लिए exercise है. It's easy, आप कर सकते हैं. ठीक. तो कहने का मतलब ये है कि this and this they are logically equivalent. f is continuous at A means this. ठीक. So that means you can, अगर आप ये वाले आप साइड को देखें in terms of purely in terms of open sets, so that means you can capture continuity in terms of open sets. So that means you can discuss continuity if you know which sets are open. अगर आपको पूरा पता है कि which sets are open, you can discuss continuity. तो यहाँ भी हम वही लिखेंगे. We can
discuss continuity if we know which sets are open. ठीक है ना? So it all boils down, मतलब discussing convergence of sequences or continuity of functions, it all boils down to knowing which sets are open. ठीक. अब क्वेश्चन है आप किन सेट्स को ओपन कहेंगे. हमारे लिए ना विल अडॉप्ट a general and a broader point of view. हमारे लिए वो सारी collections which behave like the collection of metric open sets, हमारे लिए वो सारी collections which behave like this collection will be collections of open sets. समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब हमारे लिए ये होगा, हमारा जो point of view होगा ना अब from this stage onward, वो ये होगा, if a collection behaves like ta sub d. If it behaves like ta sub d means if it has these properties. If it behaves like ta sub d, इसको ऐसे लिखिए आप, ये ज्यादा बेहतर रहेगा. A collection which behaves like ta sub d is treated as a collection of open sets. This will be our point of view from this stage onward. हमारा नजरिया भी होगा. A collection which behaves like ta sub d, that means if it has these three properties, then that collection will be treated as collection of open sets, और उसके जो elements है उनको हम कहेंगे open sets. So इस तरह से we'll know which sets are open, and therefore we can discuss convergence as well as continuity. So that means पहले ना अब ना इसको हम रिकॉर्ड करेंगे. This actually अभी तक जो मैंने आपसे कहा ना, this actually becomes the motivation for this definition. आप लिखिए definition of topology. Let X be a non-empty set. अब मेट्रिक का कोई जिक्र नहीं होगा, चाहे हो या ना हो, we don't care. हमारे लिए important है open sets, और हम उन्हीं के लिए ना उन्हीं को आइडेंटिफाई करने के लिए एक डेफिनेशन फ्रेम कर रहे हैं. Let X be a non-empty set. बस आपको एक non-empty set होना चाहिए. Then a collection ta of subsets of X. What's ta? It's a collection. Collection of what? Collection of subsets of X is said to be a topology on X. We say it's a topology on X if and only if पहली चीज phi comma x, the empty set, that means the smallest subset of X and the largest subset of X, which is X itself, they both must be elements of the collection. ये पहली requirement है. Second requirement, the collection ta, it must be closed under arbitrary unions. Full stop. No, not full stop, actually comma. And third,
the collection tar is closed under finite intersection. That means it behaves like, yeah, rather it should behave like tar sub d, the collection of metric open sets. तब जाके इसे आप कह सकते हैं टोपोलॉजी. ठीक है ना? This is definition of a topology. It's simply a collection of subsets of X, and it has to satisfy these three properties. Then it's said to be a topology. Or chunki tar sub D, the collection of metric open sets, also satisfies these three properties. So that means the collection of open sets, collection of metric open sets, it's also a topology. वो हमने तब भी क्लास में जब हमारी ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी तब भी मैंने आपसे ये चीज कही थी. So this will be definition of a topology. Topology is a collection of subsets on X of X and collection of subsets of X satisfying these three properties. ठीक, इसके नीचे एक और डेफिनेशन आप देखिए, टोपोलॉजिकल स्पेस. Let X be a non-empty set and tar be a topology on X. Right? मैं assume कर रहा हूँ it's a topology on X. That means it will be a collection of subsets of X and it will be satisfying these three properties. Then, if that be the case, if you have a non-empty set and tar a topology on X, then the pair X with tar is called a topological space. So topological space is a pair X with tar. ठीक, बेसिकली जब आप कहते हैं ना X with tar is a topological space, हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि that this is the underlying set and these are the sets which are open. ठीक, ये पहले हम चलिए इसको हम पहले लिख लेते हैं. ओपन सेट्स, यहाँ जो हमारी डेफिनेशन होगी ना ओपन सेट्स, इट विल बी कंसिस्टेंट विद दैट जो हमने मेट्रिक स्पेसेस में ओपन सेट्स की डेफिनेशन देखी थी. इट विल बी कंसिस्टेंट विद दैट, मतलब ये उसको नगेट नहीं करेगी, ये उसकी इन अ वे जनरलाइजेशन होगी. लेट X be basically we are defining here open sets of a topological space. Open sets in a topological space. Definition here, let X be a non-empty set and tar be a topology on X. Then a subset A of X is said to be open in the topological space X star. कहेंगे a subset A of X is open in the topological space X star if and only if the requirement is this, if and only if A belongs to tar. So A must be a member of tar, तब जाके आप इसको कहेंगे open in the topological space. अब कुछ एग्जाम्पल्स हम पहले नोट कर लेते हैं. Let X be equal to A, B, C. ठीक,
and suppose star is equal to phi x and singleton a. आप इसे देखिए, this star is a collection of subsets of x, है ना, इसके elements they are subsets of x, so it's a collection of subsets. अब आप देखिए, is it closed under intersections? Finite intersections. अगर आप इसके कुछ finite number of elements देते हैं, फिर अगर आप उनका intersection आप देखते हैं, वो intersection फिर से इसी collection में ही आएगा, so it is closed under finite intersections. It's also closed under finite unions. Arbitrary unions. It's closed under finite intersections and it is closed under arbitrary unions. Arbitrary union के लिए आपको basically यहाँ finite union को ही check करना है, because it's a finite collection. तो जो भी आप arbitrary union लेंगे उसको आप हमेशा reduce कर सकते हैं to a finite union. तो अगर आपके it's closed under finite unions, it must be closed under arbitrary unions. और जैसा कि ये है it's closed under finite unions. आप कोई भी element, कोई भी collection लीजिए of elements of this टा, उनका यूनियन लीजिए. फॉर एग्जाम्पल अगर आप फाई और सिंगलटन ए लेते हैं, सपोज यूनियन क्या होगा, इट विल बी सिंगलटन ए, और वो फिर से इसी का मेंबर है, सो इट्स क्लोज्ड ना. दैट इज इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि इट्स क्लोज्ड. मतलब अगर आप यूनियन में इंटरेस्टेड है, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो भी यूनियंस आएंगे वो टा के अंदर ही होंगे. देन दिस टा is a topology on X, and therefore the pair X with ta is a topological space. Okay? It's a topological space. Now let's take A as A comma B. If A is equal to this, then A is not open in the topological space X star, है ना, because topological space में open होने के लिए it has to be a member of the topology. अब यहाँ जो A आप ले रहा है, it's A comma B, and A comma B is not a member of the topology. Basically, members of TA are open. Precisely, these are the only open sets in the topological space. The definition ही वैसी है. It will be open if and only if it belongs to the topology. That means elements of topology are precisely the open sets. तो वही मैं आपसे यहाँ कह रहा था कि this will be your underlying set, and this will be the collection of open sets. So in a topological space, you know precisely which sets are open. So therefore, you can discuss continuity as well as convergence. ठीक है ना? So in this way, a topological space is a mathematical framework where you can discuss continuity of functions and convergence of sequences in a meaningful way. ये important है असल में, in a meaningful way. So this is an example of a topological space. इसमें कुछ और भी बहुत सारी examples आप देख सकते हैं. Let's take another example. Let x be equal, यही सेट हम लेंगे जो ऊपर हमने लिया था, ABC. ठीक, and ta be equal, let's call it ta1 क्योंकि ta ऑलरेडी आ गया ना ऊपर. Let's call it ta1 क्योंकि सेट वही है ना x, और ta1 में हम लेंगे एक तो phi और x. ये मैंडेटरीली आपको लेने होते हैं बिकॉज तब जाके ये टोपोलॉजी बनेगी, क्योंकि पहली रिक्वायरमेंट यही है, phi and x they must be in कलेक्शन. इसके बाद I'll take singleton a, और उसके बाद I'll take a comma b, set a comma b. इसे देखिए आप, इसमें phi और x है तो पहली रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है. इट्स क्लोज्ड अंडर आर्बिट्ररी यूनियंस. आप देखिए कोई भी कलेक्शन आप लीजिए इसके एलिमेंट्स की, उनका यूनियन अगर आप लेंगे आप यू विल एंड अप इन टा1, तो इट्स क्लोज्ड.
Similarly, it's closed under intersections also. ठीक है? Then T1 is a topology on X, and therefore X with this T1, X underlying set X together with this collection, this is a topological space. And this is an altogether topological space, because अगर आप यहाँ आप ये लेंगे, if you take A, the same set जो आपने ऊपर लिया था, if A be equal to A comma B, then A is, वहाँ ऊपर आपने देखा था not open, whereas it will be open here. Then A is open in X with gamma. ठीक, so it's a different topology. So यहाँ हमें ये भी समझ आता है कि एक ही सेट पर एक से ज्यादा टोपोलॉजीज हो सकती है. देखिए X दोनों में सेम है, बट जो टोपोलॉजिकल स्पेसेस है, तो ये मतलब गलती नहीं करिएगा. X is not a topological space. X with topology is a topological space. ठीक, X तो सेम है दोनों में, बट as topological spaces, X star and X star 1, they are different spaces. तो आप यहाँ ये इससे तो समझ सकते हैं, क्योंकि this set is not open here in this topological space, whereas the same set is open in this topological space. So say underlying set का same होना doesn't mean the topological spaces will be same. मतलब कहने का मतलब ये भी है कि एक ही सेम सेट पर आप एक से ज्यादा टोपोलॉजीज डिस्क्राइब कर सकते हैं. ठीक है ना? अब यहाँ एक और चीज अगर आप नोट करेंगे, ये जो टोपोलॉजी है टा इन द टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टा, और ये जो नीचे वाली टोपोलॉजी है टा 1, इनमें एक रिलेशन है. आप देख रहे हैं यहाँ पर दिस टा एंड दिस टा 1, क्या रिलेशन है? Contain. एग्जैक्टली, टा इज कंटेन्ड इन टा 1, या मैं ये भी कह सकता हूँ टा 1 Fine. is a bigger topology than टा, है ना? बिकॉज इसमें एक एडिशनल सेट. अब जब ऐसा होता है, जब इस तरह की सिचुएशन होती है, यू हैव टू टोपोलॉजीज ऑन द सेम सेट एंड वन ऑफ देम इज बिगर, मतलब वन ऑफ देम कंटेन्स द अदर, जो वो बड़ी वाली टोपोलॉजी है होती है, उसको हम कहते हैं फाइनर. इसे आप लिखिए डेफिनेशन. Finer topology. Let X be a non-empty set and ta1 comma ta2 be two topologies. Be two topologies on X. This underlying set is same. We say ta2 is finer than the topology ta1 if and only if and only if this thing happens. If and only if ta1 is contained in means ta2 has to be a bigger topology, तब जाके आप इसको कहेंगे फाइनर देन टा 1, एंड इट इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली फाइनर इफ यहाँ आपको प्रॉपर इंक्लूड, अगर यहाँ आप यहाँ कह रहे हैं सबसेट और इक्वल. ठीक, नाउ इफ दिस इज प्रॉपर, इफ दिस इंक्लूजन इज प्रॉपर, देन वी से टा2 इज स्ट्रिक्टली फाइनर देन टा 1. ये भी लिख के रखिएगा, स्ट्रिक्टली फाइनर. स्ट्रिक्टली फाइनर में क्या होता है? दिस इंक्लूजन इज प्रॉपर. ठीक है ना? और कुछ और एग्जांपल्स, बस 1 मिनट में आप कर लूंगा, उसके बाद चूंकि आज फ्राइडे है तो मैं आज आपको पहले ही छोड़ दूंगा. एक और एग्जांपल आप लीजिए. लेट
X be a non-empty set and ta be equal to the P of X, the power set of X. ठीक, चूंकि ta is power set of X, then this ta, या ऐसे लिखिए, then पहली चीज है वो ये होगी phi and x. Phi and x are subsets of x, and ta in this case is the collection of all possible subsets of x, so they must be members of ta. तो ये हो रहा है. दूसरी चीज, ta is closed under arbitrary unions. है या नहीं? देखिए, जब आप लेते हैं ना आर्बिट्री यूनियंस, किन के? टा एलिमेंट्स के. टा एलिमेंट्स आर सबसेट्स ऑफ एक्स. नाउ यूनियन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स विल बी अ सबसेट ऑफ एक्स. तो वो भी सबसेट ही होगा, वो यूनियन भी. बट चूंकि टा इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स, तो दैट मीन्स वो यूनियन, बिकॉज वो सबसेट है एक्स का, वो भी टा में ही होगा. So that means tar is closed under arbitrary unions. And in the same way, similarly, by the same arguments, tar is closed under finite intersections as well. That means इसमें ये तीनों properties है, so that means it's a topology. Hence, ta is a topology on X, and therefore X star, the pair X star, is a topological space. It's a topological space, right? और ये जो topological space है, इसको हम एक special नाम देते हैं. It is called the discrete topological space, whose underlying set is X, and is called discrete topological space. This pair is called the discrete topological space, and the topology itself, matlab ta, is called the discrete topology. So discrete topology means actually the power set. ठीक है ना? और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चूंकि हमें पता है ओपन सेट्स आर मेंबर्स ऑफ टा, राइट? और यहाँ जो आपकी टोपोलॉजी है, इट्स इक्वल टू पावर सेट. So that means every subset is a member of TA, so that means every subset is open. So in case of discrete topology, every subset is open. So as a remark, नीचे लिखिएगा. In a discrete topological space, every subset of the underlying set is open. Matlab if X star is a discrete topological space, then every subset of X, every subset of the underlying set is open in the discrete topological space. ठीक. और यहाँ एक और चीज भी है जो भी ना, it actually needs no elaboration. If ta be the discrete topology on X, which is non-empty, then ta is the largest topology on X. मतलब you won't be able to find a topology on X which is strictly finer than ta. Ta से बड़ी कोई topology नहीं हो सकती है इस X पर, अगर ta discrete topology है. Do you agree with me?
ये होना चाहिए बिकॉज डिस्क्रीट टोपोलॉजी मीन्स टा इज द पावर सेट, और अगर ये पावर सेट है तो पावर सेट से बड़ी और कोई कलेक्शन नहीं हो सकती ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, because it is the collection of all possible subsets. So it is the largest topology on X in this sense. Discrete topology is the largest. That means you won't be able to find a topology on X which is strictly finer than the discrete topology. So this is largest. Now can you tell me what would be the smallest topology? ये भी आप as an example लिखिए. Let X be non-empty and ta be equal to this set phi and x, only two elements phi and x. Then ta is a topology on X and is called, इस topology को हम कहते हैं indiscrete topology. Indiscrete topology on X, full stop. The topological space, the topological space X with this topology ta is called the indiscrete topological space. Indiscrete topological space. ठीक है ना. और चूंकि आपने पता है टोपोलॉजी होने के लिए फाई और एक्स का होना लाजमी है, तो मींस फाई और एक्स को आप ड्रॉप नहीं कर सकते टा से, मतलब इसको आप फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते टा को. सो इन दिस सेंस इट इज द स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी ऑन एक्स. ठीक. और यहाँ खाली दो ही सेट्स ओपन होते हैं, एम्प्टी सेट एंड द पेरेंट सेट एक्स, है ना. क्योंकि अगर आपने इनमें से कोई ड्रॉप किया फाई या एक्स तो ये टोपोलॉजी नहीं रहेगी, तो इसको आप फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते. सो इन दिस सेंस इट इज द स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी. और अगर आप देखेंगे कोई और टोपोलॉजी अगर आप लेंगे एक्स पर, उसमें फाई और एक्स होने चाहिए, सो दैट मीन्स ये जो टा है ये उसके उस टोपोलॉजी के अंदर होनी चाहिए. तो ऐसे भी इट इज द स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी. ठीक. इसे भी आप एज रिमार्क. If X be a non-empty set and ta be the indiscrete topology on X, then this ta is the smallest topology. The smallest topology on X, मतलब इससे छोटी टोपोलॉजी आप X पर क्रिएट नहीं कर सकते. सो इट इज द स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी ऑन X. ठीक है. ये मेरे ख्याल से आज के लिए काफ़ी है, क्योंकि फ्राइडे भी है, अभी नमाज के लिए जाना है, तो ये आप देख लीजिएगा. और जैसा कि मैं वो जो चीज़ मैंने आपसे कही कि दैट टोपोलॉजिकल स्पेस इज बेसिकली अ मैथमेटिकल फ्रेमवर्क वेयर यू कैन डिस्कस कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंसेस एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस in a meaningful way. असल में यही है motivation for studying topological spaces. Basically we actually जो metric spaces का जो structure है वहाँ आपने देखा, you can discuss continuity as well as convergence. ठीक. What we do, we actually remove or we actually strip away or we take away everything which is irrelevant to continuity and convergence. मतलब those things which are irrelevant to continuity and convergence, we take those things away from the metric space. और ये समझ आता है हमें कि that actually if we know which sets are open, then we can discuss both continuity as well as convergence. और topological spaces में we have precisely this information. We know which sets are open in our setting, right? That is the reason in a topological space you can discuss continuity as well as convergence.
It's actually an abstract mathematical setting where an abstract mathematical framework where you can discuss continuity of functions and convergence of sequences. ये काफ़ी है आज के लिए, आप ये देख लीजिएगा, मैं इसकी यूट्यूब लिंक आपको ग्रुप में फॉरवर्ड कर रहा हूँ। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो मुझे आप कल भी पूछ सकते हैं। अभी भी अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी भी एटलीस्ट 4-5 मिनट है। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। चलिए फिर ठीक है, खुदा हाफिज।